वो तुम्हें चांद पे ले जाए, दुनिया एक बसाए। इंसान के मन में चांद को जानने की ललक बहुत पुरानी है। इसलिए जब 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ में अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत हुई तो सबसे पहले चांद पर अभियान भेजे गए। शुरुआती दौर में हालांकि अमेरिका और सोवियत संघ ने ही ज्यादातर चंद्र अभियान चलाए, लेकिन पिछले 65 सालों के दौरान में भारत के साथ साथ 11 ऐसे देशों ने कुल मिलाकर कुल 144 चंद्र अभियान शुरू किए, जिनमें से 49 ऐसे भी रहे जो असफल रहे। चूंकि चंद्रमा के बारे में अभी भी वैज्ञानिक जानकारी केवल 1% ही मिल पाई है, इसलिए चट्टानों के अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद दोनों देशों ने इन खर्चीले अभियानों को बंद कर दिया। तकरीबन 37 साल हो गए। 2013 में चीन ने एक सॉफ्ट लैंडिंग की, जिसका और हम लोग सफल नहीं रहे। फिर भी माना गया कि भारत के चंद्रयान मिशन और उसके नतीजों ने दुनिया को दिलचस्पी चांद में फिर से जगा दी। भारतीय चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम, जिसे चंद्रयान कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, चंद्रयान इसरो द्वारा बाहरी अंतरिक्ष मिशन की एक श्रृंखला है। इस कार्यक्रम में चंद्रमा के लिए कक्षायान और भविष्य चंद्र लैंडर और रोवर को शामिल किया गया है। चंद्रयान पूरी तरह सफल है, प्रथम पूरी तरह सफल रहा। भारत ने 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। उस दौरान चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की योजना तो नहीं थी, पर चंद्रयान 1 से एक उपकरण मून इंपैक्ट प्रोब चांद के दक्षिण हिस्से पर गिराया गया था, जिसने गिरते गिरते कई महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र किए थे और इन्हीं आंकड़ों से शोध पत्र तैयार करते हुए नासा के वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की थी कि चंद्रमा पर कभी पानी था। खास बात है ये, ध्यान देने वाली। अब हम इसरो के 4 चरण वाले 326 टन वजनी और 44 मीटर लंबे चंद्रयान प्रथम के साथ ही 11 और उपकरणों को भी लॉन्च किया गया था, जिनमें से 5 भारतीय निर्मित थे और 6 अमेरिका व यूरोपीय देशों से थे। और बहुत चर्चा हुई थी इसकी, और हमारा कॉलम भारत का गर्व से था। उसकी खास बातों में बात करें, इस प्रोजेक्ट में इसरो ने पहली बार 10 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे, ये खास बात थी, और कम पैसों में की थी। दूसरा, लॉन्चिंग के समय इसका वजन 1380 किलोग्राम और चांद पर पहुंचने के समय इसका वजन 575 किलोग्राम, 523 किलोग्राम इंपैक्टर छोड़ने के बाद था। यह एक क्यूब के आकार का था, जिसकी भुजाएं 1.5 मीटर लंबी थी, मतलब 1.5 मीटर के करीब थी। इसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत उसमें लगा सोलर पैनल था, जो कि 700 वाट की क्षमता का था। ये खास बात थी। हम घरों में सोलर पैनल लगाते हैं, लेकिन छोटे से उस पे लगा हुआ था। चंद्रयान का उद्देश्य चंद्रमा की सतह से विस्तृत नक्शे और पानी के अंश तथा हीलियम की तलाश करना था, तब भी और अब भी। इसने चंद्रमा से 200 किलोमीटर ऊपर और 525 किलोग्राम का एक उपग्रह कक्षा में स्थापित किया। इस उपग्रह ने अपने रिमोट सेंसिंग उपकरणों के जरिए चंद्रमा की ऊपरी सतह के चित्र भी भेजे, जो कि बहुत ही फायदेमंद रहे। ऑर्बिटर का मून इंपैक्ट जो प्रोब था, 14 नवंबर 2008 को चांद की सतह पर उतरा था, जिससे भारत चंद्रमा पर अपना झंडा गाड़ने वाला चौथा देश बन गया था। और इससे पहले कौन कौन थे? अमेरिका, रूस, चीन और भारत। चंद्रयान का कुल बजट 386 करोड़ रुपए था, जो चीन के मूल मिशन से 2.5 गुना सस्ता था। ये थी खास बात। और इस पर हमने चंद्रयान का प्लान 2 साल का था और इसने 10 महीने 6 दिन तक कार्य किया था। चंद्रयान 1 से 29 नवंबर 2009 को संपर्क टूट गया था और इस प्रकार से उसकी कहानी यहीं समाप्त हो गई। अब बात आई चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 1 के बाद चंद्रमा पर खोजबीन करने वाला दूसरा अभियान है, जिसे मार्क 3 प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया। इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्र ऑर्बिटर, एक रोवर प्रज्ञान
और एक लैंडर जिसका नाम विक्रम रखा गया, शामिल किया गया था। इन सब का विकास इसरो द्वारा किया गया था और ये सेल्फ मेड थे, भगवान ने, भारत ने बनाए थे। भारत ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समय के अनुसार 2:43 पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। वहां कोई दिक्कत नहीं आई। लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर 70 डिग्री दक्षिण के अक्षांश पर स्थित दो क्रेटरों मजीनस सी और सिम्पेलियस एन के बीच एक उच्च मैदान पर उतारने का प्रयास हम लोगों का था। पहिएदार रोवर चंद्र सतह पर चलने और जगह का रासायनिक विश्लेषण करने के लिए बनाया गया था। रोवर द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों को चंद्रयान 2 कक्षायान के माध्यम से पृथ्वी पर भेजने की भी योजना थी, लेकिन इसके ऑर्बिटर की जो अवधि थी वो 1 वर्ष की थी तथा लैंडर और रोवर की अवधि मात्र 15 दिन की थी। इसका लॉन्च वजन 3877 किलोग्राम का था जब वो लॉन्चिंग के समय पे था और इसके ऑर्बिटल का वजन की बात करें तो 2379 किलोग्राम का था। लैंडर 1471 किलोग्राम का था और रोवर का 27 किलोग्राम था। ये था अलग अलग वजन। इसके ऑर्बिटल की ऊर्जा 1 किलोवाट थी। 1 किलोवाट से काम चला रहा था बेचारा अपना। विक्रम लैंडर की ऊर्जा 650 वाट तथा प्रज्ञान रोवर की ऊर्जा मात्र 50 वाट थी, एक बल्ब के बराबर। इसकी परिधि दूरी 100 किलोमीटर थी तथा अभी भी जो 100 किलोमीटर ही है। परिधि दूरी उसको कहते हैं जिसे रिमोट उतारा जा सकता है। सोवियत संघ, अमेरिका और चीन की अंतरिक्ष एजेंसियों के बाद चंद्रयान 2 लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाने पर भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होता, लेकिन नहीं हो पाया। काश ऐसा होता, हो जाएगा। सफल होने पर चंद्रयान 2 सबसे दक्षिणी लैंडिंग चंद्र लैंडिंग होता है जिसका लक्ष्य 67 से 70 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर उतरना था। भारतीय समय अनुसार लगभग 1:52 पर लैंडर लैंडिंग से लगभग 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था, अपने इच्छित पथ से भटक गया और अंतरिक्ष यान के साथ ग्राउंड कंट्रोल से खो गया। हालांकि इसके बारे में बात की जाए तो और भी कई सारी चीजें हैं इसमें। सितंबर 2019 को जो चीजों की मैं बात कर रहा था उसमें खास बात यह है कि लोगों का कहना है कि उस समय जब वो लैंडिंग के समय जो रॉकेट की जो ऊर्जा थी वो ज्यादा हो गई और जिसकी वजह से वो कंट्रोल से बाहर हो गया था। ऊर्जा एकदम से ज्यादा निकल गई थी जिसे हम वो रोवर कंट्रोल नहीं कर पाया था। चलिए, और इसकी सूचना दी गई ऑर्बिटर द्वारा लिए गए उष्मा चित्र से विक्रम लैंडर का पता चल गया है। इसके जो उष्मा चित्र लिए गए, परंतु अभी भी चंद्रयान 2 से संपर्क हमारा नहीं हो पाया है। हाँ, हमने देख जरूर लिया है कि ये रहा हमारा चंद्रयान 2। चलिए, वो कहानी भी अब हो गई खत्म। अब उम्मीद है नया भारत नई उम्मीद के साथ चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए इसरो द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है, जिसे आप समझ रहे हैं। पहला कब हुआ? 2008 में, फिर 2019 में और अब 2023 में 14 जुलाई को। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर होगा, वैसे ही होंगे, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2013 यानी कि कल शुक्रवार को 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 पर निर्धारित है। इसका प्रोपेल्शन मॉड्यूल संचार रिले उपग्रह की तरह है, व्यवहार करेगा। प्रोपेल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर युक्त ढांचे को तब तक अंतरिक्ष में धकेलता रहेगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में न पहुंच जाए। यानी कि चंद्रमा की जब 100 किलोमीटर की ऊंचाई की कक्षा में पहुंच जाएगा तब तक वो वहां तक उसको धकेल के ले जाएगा। प्रोपेल्शन मॉड्यूल लैंडर के अलावा चंद्र कक्षा से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल और पैरामीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए जो स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ है नाम का एक पेलोड भी ले जाया जा रहा है। ये भी साथ जा रहा है इसको। इस पेलोड का काम क्या है? इस पेलोड का वजन इस प्रकार है
इस पेलोड का वजन जिसकी वजह से ये जाएगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है 214.8 किलोग्राम का है। लैंडर मॉड्यूल जो विक्रम है 26 किलोग्राम का, प्रज्ञान रोवर 175 किलोग्राम का है और कुल वजन इसका मात्र 390 किलोग्राम का है। अब बात करें इसकी ऊर्जा की कि कितनी ऊर्जा इसे सोलर से चाहिए। प्रोपल्सन मॉड्यूल मानक समय के अनुसार दोपहर 2:35 पर LVM-3M4 चंद्रयान 3 मिशन का प्रमोशन किया जाएगा। यह पूरे भारतवर्ष के लिए एक उत्साह और गौरवपूर्ण भरा समय है। हम मिशन नियंत्रण कक्ष से मैं विकास स्वर्णकार अपने साथी कमेंटेटर मिस माधुरी पी के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपको मिशन से जुड़ी सारी जानकारियां तथा आंखों देखा हाल सुनाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और साक्षी बनिए इस ऐतिहासिक मिशन के लिए। इस मिशन को कुल 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को LVM-3 द्वारा 170 बाई 36,500 किलोमीटर की इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में 21 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाना। दूसरा, पृथ्वी की कक्षा को छोड़ चंद्रमा की कक्षा में जाना। तीसरा, चंद्रमा की सतह पर लैंडर का सुरक्षित लैंड करना। और अंत में रोवर का चंद्रमा की सतह पर विचरण करके तात्विक तथा रासायनिक विश्लेषण कर वैज्ञानिक आंकड़े जुटाना। On your TV screen, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. जितेंद्र सिंह। जी हाँ, आज के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। We are about 31 minutes from the scheduled launch time. You're watching this live from the Mission Control Center. Apart from Doordarshan, you can also watch the launch event on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. आपको ज्ञात हो, चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और 8 नवंबर 2008 को वह चंद्रमा की कक्षा में जाने में सफल रहा था और अपने मिशन का उद्देश्य पूरा किया, जिसमें चंद्रमा पर पानी की खोज भी शामिल है। फिर 29 अगस्त 2009 में चंद्रयान 1 से हमारा संपर्क किसी कारणवश टूट गया, लेकिन इसमें मील के पत्थर ने चंद्रयान 2 का मार्ग प्रशस्त किया था। चंद्रयान 2, जिसमें ऑर्बिटर के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए लैंडर और आसपास के क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए रोवर की अभिकल्पना की गई थी। चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 को भेजा गया था। इसमें ऑर्बिटर ने भली भांति अपना मिशन पूरा किया, लेकिन लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरने में असफल रहा था। इसके पश्चात गहन अध्ययन और उन्नत तकनीक से परिपूर्ण सभी परीक्षणों और सिमुलेशन के पश्चात तैयार है सुदृढ़ चंद्रयान 3। आपको संक्षिप्त में LVM-3M4 प्रमोचक यान की जानकारी देते हैं। LVM-3 प्रमोचक यान अन्य सभी यानों की तुलना में सबसे अधिक विकसित तथा उन्नत अभिकल्पित किया गया है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर तथा व्यास 4 मीटर का होता है। इसका कुल उत्थापन भार 640 टन का होता है। यह 3 चरणीय यान है, जिसकी क्षमता 4 टन के नितभार को भूतुल्यकालीय अंतरण कक्षा में यानी 180 बाई 36,000 किलोमीटर में ले जाने की क्षमता है तथा 8 टन के नितभार को निम्न कक्षा में स्थापित करने की क्षमता है। इस यान में प्रथम चरण में 2 S200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं, जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण हैं, जिन्हें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उन्नत और परिपक्व उत्पादन प्रणाली द्वारा निर्मित किया जाता है। दोनों S200 के मध्य में L110 चरण है, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, और इसके ऊपर की ओर
28 टन के क्रायोजेनिक ईंधन वाले C-20 इंजन का प्रयोग करते हुए C-25 चरण है, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है। इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर IPRC द्वारा विकसित किया गया है। As we await the launch, let me tell the viewers about the flight events for LVM-3 M4 Chandrayaan-3 mission. At T0, the twin S-200s will be ignited and the mighty LVM-3 rocket lifts off. The core L-110 stage is air-lit 108 seconds into the flight, while the rocket is at an altitude of 45 kilometers. The S-200 strap-ons and L-110 will thrust together for the next 20 seconds. Thereafter, the strap-ons will separate at 127 seconds past launch time, while the rocket is at 62 kilometers altitude. The relative velocity gained by the rocket in the meantime is 1.59 kilometers per second. At an altitude of 71 kilometers, closed loop guidance is initiated for LVM-3. Separation of payload fairing takes place at 195 seconds past the launch at an altitude of 115 kilometers. The core 110 stage, having completed its burn time of about 200 seconds, is separated from the ongoing rocket. This event takes place at 306 seconds into the flight. At this point of time, the altitude will be 175 kilometers and the rocket would have acquired 4.2 kilometers per second relative velocity. Then the upper cryogenic stage, C-25, ignites 2 seconds later and continues to burn for close to 650 seconds. During the operational regime of C-25, the largest relative velocity addition takes place. It increases from 4.178 kilometers per second to 9.804 kilometers per second. And the most awaited moment of the Chandrayaan-3 separation is scheduled to take place at 969.7 seconds into the flight. The altitude will be 179.3 kilometers, which is a part of elliptical transfer orbit of 170 by 36,500 kilometers. From then on, the mooncraft Chandrayaan-3 would commence its journey to the moon. इस मिशन का काउंटडाउन 25.5 घंटे पूर्व शुरू हो चुका है और इस दौरान रॉकेट तथा अंतरिक्ष यान को पावर ऑन कर सभी तंत्रों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इस दौरान L-110 चरण तथा क्रायोजेनिक चरण पर ईंधन का भराव सुनिश्चित किया जा चुका है। यह काम प्रमोचन मंच से सुदूर स्थल पर पूर्ण स्वचालित तकनीक से पूर्ण सुरक्षा के साथ संपूर्ण किया जाता है। आप अभी अपनी स्क्रीन पर यहाँ व्यूअर्स गैलरी का दृश्य देख रहे हैं। बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं इस रोमांचक दृश्य को देखने के लिए। मौसम विभाग के अनुसार मौसम पूरी तरह सामान्य अनुकूल है इस प्रमोशन के लिए। अब आपके सामने प्रस्तुत है LVM-3 का इंटीग्रेशन वीडियो। We bring to you a small clipping of the integration video for the LVM-3 rocket. Minus 25 minutes. On your TV screens, you are watching the visuals from second vehicle assembly building where the full LVM-3 M4 rocket has been assembled. These are the strap-on boosters getting assembled segment by segment. Roger. Each S-200 has got 3 segments Roger. called nozzle end segment, middle segment and head end segment, to which the nozzle is assembled, and one after the other the segments are joined together.
When the fully assembled solid rocket booster is handled carefully with a crane and being lowered on to the mobile launch pedestal as an integrated rocket, the igniter assembly then takes place, and this is the strap-on nose cones. On your TV screens, it is the core L110 stage being brought to the second vehicle assembly building for tilting and assembly between the S200 boosters. जी हाँ, अभी आपने देखा दोनों S200 स्टब-ऑन बूस्टर्स के साथ L110 को भी संलग्न कर दिया गया है और यह है क्रायोजेनिक अपर स्टेज, CH-25 कहा जाता है इसे। बहुत ही जटिल इंजन है ये। और मून के C-20 इंजन बहुत ही साउथ पोल भी कर सकते हैं। ठीक बात है। पूरी दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया जाता है। यह है इक्विपमेंट बे जो कि दिमाग है इस रॉकेट का। वेरी गुड। यह है मेटल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल। और क्या कर सकते हैं खास? चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये। हीलियम 3 की लड़ाई चल रही है वहां पर। चाइना ये कह रहा है, हम पे आरोप लगा रहा है, चाइना का कहना है कि हम लोग हीलियम 3 की बात कर रहे हैं। चंद्रयान 2 के पश्चात हीलियम 3 का मतलब है कि एक धातु तत्व है जो बहुत बड़ी मात्रा में चंद्रमा पर है। और खास बात इसकी बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में थोड़ा सा सब मोटा मोटा मैं पहले हल्का से बता दूं और फिर आपसे। और यहाँ आप देख रहे हैं लैंडर और रोवर को। ये रोवर है जो चंद्रमा में विचरण करेगा। पूरी सावधानी के साथ इसे संयोजित कर दिया जाता है और यह लैंडर मॉड्यूल रोवर के साथ अब इस लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ संयोजित कर दिया जा रहा है। -22 minutes. Request all stations change over to channel 2 at T-21 minutes. No confirmation सभी is परीक्षण needed to control. पूर्ण होने के पश्चात MCC confirms data from chain 2. इस समुच्चय को पेलोड फेयरिंग के अंदर सुरक्षित कर दिया जा रहा है। पेलोड एडेप्टर, अंतरिक्ष यान और पेलोड फेयरिंग, और इसे लाने के लिए साथ साथ ही बहुत सारी चीजों को कहते हैं। अब इसे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है। उसमें जोड़ भी सकते हैं। क्या करना चाहिए कि की मदद से इसे क्रायो स्टेज के मैं एक मिनट इसकी आवाज चेक कर ले, क्या आवाज किसकी ज्यादा आ रही है? इसमें देखो अपना मोबाइल में आवाज क्लियर है। मेरी आवाज आप पीवीएस पे देखो, पीवीएस पे आवाज आ रही है। नहीं, इस पे विज्ञान आओ करके सीखे पे। अब हम लोग जो अभी हम प्लान कर रहे हैं उसके पीछे मकसद सीधा सीधा सा ये है, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है हीलियम के साथ में और दूसरी धातु को लाने की प्लान कर रहे हैं हम लोग। ये छोटा वाला स्टैंड दे दो मुझे पकड़ने के लिए। चलो रहने दो कोई बात नहीं, कोई नहीं, इट्स ओके, रहने दो। तो चंद्रयान 1 और 2 और 3 अभी तक नासा, अभी हम सबसे बड़ा स्पेस में किसको मानते रहे हैं? नासा को मानते रहे हैं। नासा की बात किसको मानते रहे हैं? इसरो को। क्यों? ऐसा क्या खास बात है इसरो में जो इसरो को मान रहे हैं? पता नहीं, ऐसा नहीं पता। चलिए, पता होना चाहिए कि हम इसरो को क्यों मान रहे हैं। एक्चुअली इसरो को हम इसलिए मानते हैं कि अब दुनिया में सबसे ज्यादा कम पैसों में विदेशों में जाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो उसका वही है। और इसकी वजह से सबसे कम पैसे, जब 2008 में हमने चंद्रयान 1 भेजा था ना, तो जब 2008 में भेजा था तो उसका नतीजा यही निकला था कि हम लोग बाहर गए थे और बाहर जाने के साथ साथ में
कम पैसों में, सबसे कम पैसों में, जो 2000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे, 4000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे, तो वहां पर हम लोग जो है क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे इसका क्वालिटी कहना चाहिए कि 300-400 करोड़ रुपए में काम चला रहे थे। तो कहां 2000 रुपए और कहां 400 रुपए, कितना अंतर आ गया, फर्क आ गया ना। तो यही खास बात थी कि हम उसमें सबसे सस्ता कम से कम पैसों में कर पा रहे थे, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, इसको बीच में बदलते रहेंगे, हमें बदलना पड़ेगा। ये इंटरनेट की स्पीड यहाँ कम है। मोबाइल तो ज्यादा तो नहीं खोल रखे यहाँ के आप लोग, यहाँ का वाईफाई तो यूज नहीं करते। चलिए, थैंक यू। चलिए, जो है 758 वाट में काम करेगा, लैंडर 738 वाट में और रोवर मात्र 50 वाट में काम करेगा। कमाल है ना ये सब, इतनी सारी ऊर्जा के साथ। अब ये खोजेगा क्या, अब वहां खोजेगा हीलियम, खनिज लवण, दुनिया भर के तत्वों को खोजने और जानने समझने की कोशिश करेगा। जिसको हमने 37 साल पहले सोच को बंद कर दिया था, उस सोच को 37 साल बाद for the launch operation sequence of launch of LVM-3 M4 Chandrayaan-3 mission at 14 hours 35 minutes 17 seconds Indian Standard Time. Today, the 14th July 2023, from second launch pad of SDSC Shar. Control Roger. All stations to know. Mission Director has given authorization for launch. जी हाँ, अभी आपने घोषणा सुनी। मिशन डायरेक्टर ने इस लॉन्च के लिए ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन दे दिया है। इसके पश्चात व्हीकल डायरेक्टर ALS ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करेंगे। On your screens, you have just watched Mission Director Shri Mohan Kumar giving clearance for the initiation of automatic launch sequence. This is based on the confirmation of readiness of all participating team for range, launch vehicles, spacecraft, and tracking. The automatic launch sequence is scheduled to begin at T-14 minutes 30 seconds, as a part of which the most critical control system elements are checked for the launch vehicle. Minus 17 minutes. Very close to the launch time, control will be passed on to the onboard computers. VLCC to LCC to note. Timing व्यूअर्स confirmed गैलरी दर्शकों से Excel full खचाखच भरी हुई। VLCC Roger. बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। Enthusiastic viewers from all across the country gathering at Satish Dhawan Space Center Launch View Gallery for witnessing this historic moment of Chandrayaan-3 launch. Copied. The countdown for LVM-3 M4 Chandrayaan-3 mission has lasted for 25.5 hours. It was commenced on 1:30 p.m. yesterday. While of operation of hydrogen tank. During scheduled at countdown, yellow. the launch vehicle Minus stages 16 are serviced with propellants. Vehicle director to Gas ALS bottles console. meant for stage Vehicle operations are director charged. authorizes While the Earth automatic storable launch sequence propellant for the filling was LVM-3 concluded M4 more than Chandrayaan-3 16 mission. hours ago, ALS the cryogenic propellants SDA servers activated. MC confirms data from SHAR-1 अभी and अभी SHAR-2. कंफर्म किया गया है। व्हीकल डायरेक्टर श्री बीजूसी थॉमस ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया है। अब यह लॉन्च व्हीकल LVM-3 M4 रॉकेट ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस के अंतर्गत है। इसका मतलब ऑनबोर्ड कंप्यूटर पूरी तरह स्वचालित हो चुका है। ALS in auto mode. we are very close to the launch, and the day of launch wind biasing data is fed during the countdown to the onboard computers to enable most suitable steering of the launch vehicle through atmosphere. Up next, we will watch a curtain raiser video on this Event mission. number 465. Request CGSS to confirm supply of GN2 to cryogenic. Moon. This familiar object in the night sky has inspired the imagination of astronomers and ordinary people alike. From time immemorial,
humans have marveled at the beauty of the moon, used it to count time and navigate the high seas. In modern times, Moon, the only natural satellite of the Earth, has acquired added importance due to the belief that Moon is the key to our understanding of the evolution of the solar system in general and Earth in particular. Besides, Moon's precious resources and low gravity have further endeared it to humans. India, a major spacefaring nation, has conducted a detailed exploration of the Moon through its Chandrayaan program. The country has sent 2 robotic spacecraft to orbit the Moon and to take a repeated look at its surface. Chandrayaan-1 demonstrated India's ability to reach the surface of the Moon at a place and time of its choice. And with it, India became the 4th country to reach the surface of the Moon in November 2008. Besides, Chandrayaan-1's conclusive discovery of water on the Moon in 2009 was praised as a path-breaking discovery. The follow-on mission, Chandrayaan-2, had an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragyan. In the past 4 years, the orbiter has repeatedly observed the lunar surface and even today is working satisfactorily. Now, 3,900 kilograms Chandrayaan-3 spacecraft is being sent to the Moon with the objective of making yet another focused attempt to slowly land on the lunar surface and to explore it with the help of a rover. Following the spacecraft launched by India's most capable rocket LVM-3, the Chandrayaan-3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the Moon by the propulsion module. A little later, the lander will separate from that module and will attempt to make a soft landing in the south polar region of the Moon. This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain water ice and precious minerals. Chandrayaan-3 lander has 4 scientific instruments or payloads, of which one will study the moonquakes, while the other one studies as to how the surface of the Moon allows heat to flow through it. The third one will study the plasma environment near the Moon's surface. And the fourth instrument will enable scientists to measure the distance between the Earth and Moon very accurately. The 2 instruments on the rover help us study the composition of the Moon's surface using X-rays and laser respectively. While the lander and rover will be in direct contact with each other. The propulsion module circling the Moon will observe the light coming from Earth, the only planet which we know which is definitely teeming with life. This observation will help in understanding the nature of distant planets circling stars other than the Sun. As Chandrayaan-3 undergoes important tests and gears up for launch, thousands of ISRO scientists, including those who will launch it, control it and receive the precious scientific information from it using giant dish antennas, are readying themselves for the challenging tasks ahead. In the past, their dedication and skill have enabled India to earn praise from across the world and made it proud. Let us wish them well in this great endeavor called Chandrayaan-3. आपके सामने हैं इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ। अभी अभी आपने देखा एक संक्षिप्त वीडियो जिसमें एनिमेशन की मदद से इस पूरे मिशन की यात्रा को बताया गया है, इस मिशन के ऑब्जेक्टिव को समझाया गया।
tank level correction completed. Chandrayaan 3 has two predecessors with destination moon as their mission objective. Chandrayaan 1, launched by PSLV C-11 in October 2008, included lunar orbiter and impactor. During the mission life of around 10 months, Chandrayaan 1 had mapped the minerals on lunar surface, acquired 70,000 images to help create 3D atlas of moon, and what's more, found water on moon's polar regions. Chandrayaan 2, launched by LVM-3M1 on 22nd of July 2019, consisted of lunar orbiter, lander named Vikram, and rover named Pragyan. The orbiter is still providing insightful scientific information through its payloads like spectrometers, synthetic aperture radar, and cameras. चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह में उतरने के इस मिशन को कुल 10 चरणों में पूरा किया जाएगा। संक्षेप में यह इस प्रकार है। सर्वप्रथम चंद्रयान 3 को LVM-3 प्रमोचक रॉकेट द्वारा पृथ्वी की एलिप्टिकल टारगेट ऑर्बिट, जो कि 170 बाई 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट है, उसमें प्रमोचित किया जाएगा। वहां से चंद्रयान में मैन्यूवर कर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सहायता से चंद्रयान की गति को वृद्धि की जाएगी। फिर चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में जाते ही उसमें फिर से मैन्यूवर कर चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। फिर सही समय आने पर लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से पृथक कर दिया जाएगा। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य है लैंडर तथा रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में, जो कि 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा होगी, उसमें उचित अभिवृत्ति में लैंडर मॉड्यूल को अपने से पृथक कर चंद्रमा की सतह पर भेजना है। ऐसा करने के लिए इसमें MMH और मॉन का प्रयोग कर 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स वाले इंजन्स लगे हुए हैं। इसमें आवश्यक संचार सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। Speaking about the major milestones in the journey of Chandrayaan 3 to the moon, the spacecraft consists of propulsion module, lander, and rover. Lander is planned to touch down at south pole of moon. The major 10 phases of the mission are: the first phase, called the Earth-centric phase, comprises of pre-launch, launch, ascent, and earthbound maneuver. While the second phase is the lunar transfer phase, as the name suggests, the Chandrayaan spacecraft moves closer to the moon. Next 8 phases are in the moon orbit, the third being the lunar orbit insertion, followed by the moon-bound maneuvers phase, which mark the fourth phase. And next it is now that the propulsion module separates from the lunar module 6 minutes. When 100 by 100 circular orbit of the moon is achieved. The Chandrayaan 3 in its sixth phase carries out D-boost from 100 kilometers to 100 by 30 kilometers orbit, followed by the pre-landing phase as seventh phase, and then the most awaited landing phase takes place. आपके सामने है मिशन नियंत्रण कक्ष का दृश्य। सभी सेंटर डायरेक्टर्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस किस तरह पूरा हो रहा है। दर्शक दीर्घा भी इस इंतजार पे। प्रमोशन से हम 5 मिनट की दूरी पर हैं। -5 minutes. Most of you might recall the Chandrayaan 2 mission MC confirms radar and the data. intense moments when all the enthusiastic Indians were waiting for the touchdown of the lander on the surface of moon. The launch view gallery with the overwhelming crowd of visitors
पूरे दर्शक दीर्घा यहाँ बहुत उत्साहित। मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सब अपनी सुविधाओं के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। We are close to 4 minutes from the scheduled launch time. minus 4 minutes. Gaining from the heritage of Chandrayaan 2, the Chandrayaan 3 is upgraded in several aspects for the enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. Onboard computer in flight mode. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान सभी संचार तंत्रों की स्वास्थ्य जांच, बैटरी आवेशन पूर्ण किया जा चुका है। कुछ अंतिम गतिविधियां जैसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर रियल टाइम प्रोग्राम लोड करना, पायरो लाइन को आर्म मोड में लाना, गैस टैंक का अंतिम आवेशन, और यह सभी घटनाएं संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। minus 3 minutes. अब हम उड़ान से 3 मिनट की दूरी पर हैं। प्रमोशन तथा इस प्रमोशन की घटनाक्रम को पहले ही बताया जा चुका है। सर्वप्रथम दोनों S200 स्ट्रप-ऑन बूस्टर प्रज्वलित किए जाएंगे T0 पर। Pre-flight pressurization of the hydrogen tank commenced. S200 के प्रज्वलन के 108 सेकंड के पश्चात L110 जो कि minus 2 minutes. तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। L110 के प्रज्वलन के पश्चात करीब 137 सेकंड पर S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। We are close to 1.5 minutes from the scheduled launch time. सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। इस यादगार पल के लिए यहाँ सब उपस्थित। minus 1 minute. अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर। 45 seconds. minus 50 seconds. All sequences armed. Stage ready. minus TB ready. 45 seconds. minus 40 seconds. L110 VHPP open. MOV minus 79 33 open. seconds. minus 30 seconds. Real-time programs activated. minus 25 seconds. L110 VSPP open. minus 20 seconds. minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को
रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant. 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of hypergolic earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second, that is 250 kilometers every minute. L110 stage performance normal. LVM-3M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C-25 का प्रज्वलन भावी है। Plus 5 minutes. L110 stage thrust cut off and separated. C-25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited.
जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन, और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude stage is close. performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage आइए performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan-3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A landway probe called Rambha to measure the near-surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's surface thermophysical experiment, or CHASTE, to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ILSA is there. The rover, after its descent, will further the scientific study objectives through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS or laser-induced breakdown spectroscope is included. Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं।
रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है। यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सेस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है शीप स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। As we have told you about the Chandrayaan-3's upgrades in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. During the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to thrive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on lunar surface. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan-3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan-2 in the last few minutes of its descent has revealed to the scientists the necessity for upgrade in the guidance algorithm. Inputs from various sensors are used by the autonomous navigation guidance algorithm of Chandrayaan-3 to plan the flight path to the most suitable landing spot. The engines of Chandrayaan-3 are capable of more gradual throttling also. वर्तमान में हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा। और उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर चंद्रयान-3 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। चंद्रयान-3 को LVM-3M4 द्वारा एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में लॉन्च करने के पश्चात 170 किलोमीटर की पेरिजी पर क्रमशः 5 बार मैन्यूवरिंग कमांड दिया जाएगा। 5वीं बार में यह पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा, जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। फिर 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैन्यूवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहाँ यह उचित समय और अभिवृद्धि में लैंडर मॉड्यूल को पृथक करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। We have come
close to 900 seconds after the launch. Currently, the C-25 stage is thrusting. Current relative velocity is 9.29 kilometers per second. जी हाँ, कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण LVM-3M4 रॉकेट का चंद्रयान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है और उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त होते ही और उचित अभिवृद्धि प्राप्त होते ही चंद्रयान 3 को अंतक्षेपित कर दिया जाएगा। Cryo stage thrust cutoff. Satellite injection condition is achieved. अभी पुष्टि की गई चंद्रयान 3 को प्रमोशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। Chandrayaan 3 satellite separated. चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayaan 3 has attained a major milestone successfully. Chandrayaan 3 mission accomplished. Handing over to mission director. This is mission director. The LVM-3M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. LVM-3M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। अब इस मिशन के बारे में हम अध्यक्ष महोदय से सुनेंगे और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। We sign off. Up next is address by Secretary DOS, Chairman ISRO. Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM-3, and we have also the mission director for the Chandrayaan 3 craft, the project director of Chandrayaan 3, Veera Muthavel. So over to them, Mohan. Thank you, sir. Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees. I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan 3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise three things here. The vehicle systems are in the
continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats, and the pocket, backward gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. And the CE20 stage also is perfectly actually So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because mission executives for all the supports all along the launch campaign process as well as the launch. Once the launch manifest is released and mission executives are identified, really this is a penance of so many across the ISRO centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, SHAR, URSC and SAC, along with all our industrial partners, major players to the small scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and called the also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days. And my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind. Respected Chairman ISRO, Center Directors, dignitaries and my team Chandrayaan 3, very happy to note that our Chandrayaan 3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM3 team. And all our spacecraft health parameters are normal, including the power generations in both propulsion module and lander module. Our journey to moon has begun now for the most awaited soft landing. We'll be closely monitoring and controlling the spacecraft from ISRAC Bangalore. Many critical events are lined up, starting from earthbound maneuvers, insertion into the lunar orbit, and separation of lander, and set of deboost maneuvers, and finally the power descent phase for a soft landing. I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors for entrusting me this opportunity, who have been the motivational and guidance force behind this mission. My special thanks to Chandrayaan 3 project executives, Associate Project Director Kalpana, Deputy Project Directors, Project Managers across the ISRO centers who have provided an excellent support in building the spacecraft. My special thanks to the expert committees for their constant guidance throughout the various stages of the project. I also thank the various work centers and industries who have contributed directly and indirectly to this mission. My special thanks to URSC council members, group directors, deputy directors across the ISRO centers. And looking forward for the soft landing,
with all your wishes and blessings from the God. Thank you. We have our Honorable Minister for Space, Minister of State for Space, Dr. Jitendra Singh ji, amongst us during this historic occasion of success